ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का। We are studying 4th chapter, verse number 2. पिछले श्लोक में भगवान ने In the previous verse, जो योग जिसका वर्णन इन्होंने पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में किया, the explanation of yoga that he had given in 2nd किस and प्रकार 3rd chapter, regarding that, की he परंपरा said को उन्होंने how सूर्य से आरंभ किया। he began this yoga parampara सूर्यदेव ने by instructing Surya Dev, मनु ने इक्ष्वाकु and को he इस gave it to प्रकार Manu, and then to परंपरा चली। Manu gave it to Ikshvaku, and this is how the parampara उसी कड़ी में continued. आगे So in that बोलते हैं, chain, he continues. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। राजर्षियों ने इस Translation. ज्ञान योग को परम The royal sages thus understood this yoga of wisdom received through sacred tradition. शत्रुओं को संतप्त करने वाले O scorcher of enemies, over a great lapse of time, this yoga was gradually lost to the world. तो
यहाँ भगवान परंपरा की बात कर रहे हैं So here Bhagavan is talking about कि parampara because सत्य जो है truth वो कभी पुराना नहीं होता है is never old कभी नया भी नहीं होता, and never new also. इसलिए उसको उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था That's why in the previous verse he referred to it as avyayam. योग प्रोक्ता मया प्रोक्ता अव्ययम। तो So अव्यय का मतलब है जो विनष्ट नहीं avyaya होता, means that which is सदैव never सदैव destroyed, चल रहा है। and never तो destroyed इसीलिए means इस युग में मतलब कि इस मनवंतर में क्या परंपरा है उसके बारे में बोला उन्होंने। तो परंपरा का मतलब होता है वाह, परम और अपरम। परम माने वो so दूसरी तरफ parampara is param and aparam. Param means the other ऊपर side, नीचे aparam this side, इधर meaning from इसको top to परंपरा down. कड़ी जिसको It's बोलते like हैं, a chain. संतति प्रवाह, ये शब्द हैं परंपरा के। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, Like Ganga appears वहां से from Gangotri and समुद्र coming में from there, जाकर it goes and finally mixes in the ocean. ये पानी। So the parampara of the water continues because the water that is तो ये flowing. गंगा नदी है, कल भी मैंने गंगा So दर्शन you किया say था। that this is Ganga. Earlier, so I saw this Ganga. Now also I'm seeing हो Ganga. रहा है तो जो कल But आपने the water that is इस flowing, जल में कल आपने so स्नान किया था, the water in which you took उसमें bath yesterday तुम्हारा or you अंतर saw yesterday, in जीवत्व that है। same water you cannot take bath today because that water has moved देखने में ऐसा ahead. लगता है कि वो But when you बदल see, it प्रवाह appears that it is same only because the flow is परंपरा continuing. ये धारा Similarly, the flow of knowledge या एक ज्योति, or ज्योति the को light of knowledge परंपरा बोलते हैं। that जैसे दीपक continues, जलता है तो उसका like जो लौ है the वो हमको ऐसे लगता है कि lamp, ये light of the lamp, स्थायी है, it appears that it is जल constant, रही है और but जल it is थोड़ी constantly देर के लिए burning. जब चौथी आई तो ऐसा लगता है कि वो वही है, So it appears that it is same उसी only. को परंपरा बोलते हैं। So this is called तो इसी parampara. प्रकार ये ज्ञान की भी एक परंपरा Similarly, है। this is the parampara of वंश knowledge. परंपरा होती है, पहले Like we दादा have दादी the के पिता दादी। parampara and the dynasty. तो इस ज्ञान की परंपरा का कहने का मतलब है कि ये जो सत्य है So this Gyan ये Parampara, the वही है parampara of knowledge, means और that पहले भी the था लेकिन truth अब never changes. इसका प्रवाह It was there earlier also, लुप्त हो गया, but जिसकी चर्चा for the time being, it was समय lost. के अनुसार That Bhagavan is discussing that. इसका लोप हो गया। और लोप होने का क्या कारण है And why it was lost, तो उसको समझना होगा। that is what we have to पहले तो वो understand. कहते हैं कि परंपरा So सिर्फ first of all, राजर्षियों he को प्राप्त says होती है, that the Rajarshis, the royal sages, received this yoga of wisdom through parampara. उन्होंने किया, कहते हैं राजर्षयो विदु। He is talking about क्योंकि Rajarshis, पूर्व काल में जब meaning in the old राजा time लोग होते थे तो उनका when एक the मौलिक kings were there. कर्तव्य होता था कि So their उनके समाज में primary duty धर्म का पालन होता रहे, was to ensure that the जिसको वो society समझते थे continues to follow dharma. धर्म Like की एक Bhagavan प्रथा speaks एक in this परंपरा chapter होती है कि मैं that धर्म की I संस्थापना करूं appear in this हर युग world में to आकर। establish dharma तो in इसी every प्रकार yuga. से So राजा in लोग the same way, the वो kings, धर्म की स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। one of their main duties तो वो was to ये establish ध्यान रखते dharma, थे कि समाज to में make sure लोग that in the धर्म को मानते society रहे। people follow dharma. और अगर राजा भ्रष्ट हो And जाएगा if the king becomes तो corrupt, समाज भी ये कहा जाता था, प्रजा समाज भी भ्रष्ट हो then जाएगा, the society will also क्योंकि become अगर राजा corrupt. के पास में Meaning, धर्म if का ज्ञान नहीं रहेगा the king does not have तो knowledge समाज of भी इसी प्रकार का dharma, रहेगा। then society will तो also समस्या emulate जो है the वास्तव king. में राजाओं से आती है। So the problem begins from the तो kings. इसलिए पुराने जमाने के जो राजा लोग थे वो अध्ययन That's को why बहुत in the मानते old थे, times, the kings, they शिक्षा were को, very devoted to study of Shastra. They were taught Shastra अनुशासन from विशेषकर, childhood itself, and especially on यहाँ तक dharma. कि To बृहदारण्यक the उपनिषद extent में कथा है in Brihadaranyaka Upanishad, there is a अनेक ऋषि katha लोग जो हैं वो that दूसरे ऋषियों के many पास में जाकर ज्ञान rishis, प्राप्त करते थे। they used to go to the Rajarshis, the जैसे royal अभी the kings, and take knowledge from एक them. राजा की कथा है कि
there is a story of Ashwapati king, how six rishis went to him and उनसे ज्ञान प्राप्त took knowledge, received knowledge from the king. उस अश्वपति ने And the Ashwapati king, he spoke a statement पदे कदयो न मदत नाग्निर्ना ना नाहित अग्निर्ना अविद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुतः। और राजा कहता है कि मेरे राज्य the में king says कोई चोर that नहीं है in my और कोई आलसी व्यक्ति नहीं है, in my kingdom there is no thief, there is no lazy person, कोई there is no शराबी नहीं है, irreligious person, कोई ऐसा नहीं no है जो drunkard, अग्निहोत्र ना करता हो, there is nobody who doesn't do Agnihotra, कोई ऐसा नहीं है जो विद्वान ना हो, there is nobody who is not intelligent, और कोई ऐसा नहीं है जो गृहस्थ होकर दूसरी स्त्रियों से संपर्क करता and हो। there is nobody who, being a grihastha, इसलिए mingles with others' wives also. वेश्या नहीं है, In my kingdom there is no क्योंकि prostitute. आदमी स्वयं ही इतने धर्मनिष्ठ है तो वेश्या क्या करेगी, उनकी Because आवश्यकता when the नहीं। person himself is so much तो ये devoted to बृहदारण्यक का dharma, वाक्य है what will the जो कि हमारे prostitute शास्त्रों do? को बहुत प्रमाणिक माना जाता है, श्रुति है And उसमें। this is from Brihadaranyaka Upanishad, which is a very authoritative लोग कितने book, धार्मिक होते थे part of Shruti. और उनके कारण So से we वो राज्य understand that the kings were so religious, और आज भी हम समझ सकते हैं and कि under them the society was also so religious. And लोकतंत्र है जो today also we can understand the republic इसलिए that अगर we have. हमारे नेता In लोग that republic also, if तो our प्रजा पर कैसा leaders, असर पड़ता है if they are जब religious, वही आपस में then it influences the भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ citizens. बोलते हैं, But if they only become corrupt, speak धर्म का नाश lies, करते हैं तो लोग भी and do उसी की तरफ irreligious बढ़ते हैं। activities, then other people also emulate them and they also become इसलिए यहाँ irreligious. राजर्षि शब्द का That's प्रयोग why किया here है, the word Rajarshi is राजा used by Bhagavan. राजर्षयो विदु। तो ऋषि का मतलब होता है जो So दर्शन करता है, Rishi means जो drashta, मंत्र दृष्टा है न तो करता रहा। यानी कि ऋषि meaning वो है जो that वास्तव में उस Rishi is ज्ञान को one उसने who, आत्मसात किया है, who has imbibed that जिसका knowledge, उसको अनुभव है, who has केवल experienced the knowledge. किताबी ज्ञान नहीं है It is कि not पुराण just पढ़ लिए, theoretical bookish knowledge, श्लोक याद कर लिए, just memorizing verses but no जैसा आजकल experience. हम प्राय यूट्यूब Like पर देखते हैं nowadays, what we see mostly छोटे on बच्चे YouTube, या तो प्रवचन even small देते हैं, children, they give lectures. तो उनको ज्ञान तो है, So they have या knowledge, उनको अनुभूति है, but do they have experience? क्योंकि Do they have जब तक realization? ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है तो वो Because उसी प्रकार until से and चलते unless you रहते हैं। realize the knowledge, then what happens? लेकिन It's जब like a उसकी parrot समस्या आती है repeating. तो But आदमी when we उससे ourselves face संतुष्ट the या problem, उस ज्ञान का then लाभ we उठा पाता work है। according to our samskaras, not according इसलिए to the बहुत knowledge बहुत that ऐसा we have होता है कि received. लोग And it is often जैसे seen कथावाचक that those who are big प्रवचन katha, करता है many times those who are big katha vachaks, they give उनकी व्यक्तिगत big जीवन lectures देखो, to huge सब crowds. कुछ If you see their personal lives, व्यवहार देखने then को मिलता है। you will see some इसलिए irreligious कहना अच्छा behavior, लगता है कि जब समाज को ashastriya behavior in their life. पता चलता है, And when society comes to know about it, इसी से फिर they lose faith. ये जो भगवान कह रहे हैं And काले ने महता योगो नष्ट परंतप, वो योग फिर विनष्ट हो जाता है। विनष्ट का मतलब लुप्त this हो is जाता how है, the knowledge क्योंकि इसी योग becomes को lost भगवान to ने the world. अव्ययम कहा Because पिछले this is the श्लोक में, knowledge for which Bhagavan कि इमम in the पुरुषम previous verse said it is avyayam, अव्ययम। imperishable. तो अव्ययम का मतलब तो ये होता है जिसका कभी व्यय So नहीं होता, avyaya कभी means विनाश नहीं that होता। which is never और perishes. यहाँ पर कहते हैं कि योगो But नष्ट परंतप, here he says yogo तो nashta. इसमें तो विरोध दिखता है। So then it पिछले श्लोक में looks like a जिसका व्यय contradiction. कहा, In the उसमें previous इस verse, he said that तो this knowledge is avyaya, imperishable. But here he दोनों says that एक साथ तो this नहीं knowledge was चलेंगे, lost. या तो It, वो नष्ट हो it गया या was तो वो हो destroyed. गया, दोनों एक साथ तो संभव So नहीं है। either it will be imperishable or it will be तो destroyed. इसलिए How विनष्ट can शब्द का it be मतलब ये both? होता है कि That's जिसका why नाश नहीं here होता, जिसका this निर्मूलन नहीं nashta होता। does not mean destroyed actually. It was lost जैसे कोई to the चीज world. आपके कमरे में ही रखी Like हुई है लेकिन if there is something in your आप home, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, but you are not able कहीं भी to रखी हो, find it. It may be in your वस्तु तो pocket. वही है लेकिन आपकी
So the object is there only, but it is lost from your vision. नस धातु अदर्शन अर्थ में, In Sanskrit, Nash Dhatu means adarshan, meaning it is not there in front of our vision. खत्म हो गई It is not that the object ceases to exist altogether. तो ये नष्ट क्यों हो जाती है, So then why does it become lost to the world? Understanding that is also important. ये परंपरा है, और फिर ये कहते हैं कि परंपरा जो है समय के अनुसार नष्ट हो गई। This is a parampara, and then you say that over a lapse of a period of time it was lost. So who is responsible for this? Human beings are responsible for this. Like Ganga is flowing since thousands of years, who knows since how many thousands of years. तो उसकी परंपरा तो विलुप्त नहीं हुई, So the parampara was not lost. भी बांध दोगे तो ठीक है, पानी Even if you create a dam, पानी निकल के परंपरा तो उसकी निकलेगी कहीं से, पानी को तो बिल्कुल आप रोक नहीं सकते, उसका the water will somehow or other flow. You cannot stop it altogether. तो यहाँ क्योंकि ये ज्ञान की परंपरा है, So here, since we are talking about a Gyan parampara, दूसरे व्यक्ति से इसको सीखना पड़ता है, meaning one person has to learn it from another person. केवल इतना ही नहीं है कि And learning doesn't just mean memorizing. हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहते हैं क्योंकि वेदों को Like in our tradition, Vedas are called Shrutis because they are heard and memorized. ब्राह्मण लोग थे जो उसको अपने स्मृति में रखते थे, तो सुनकर And the Brahmanas used to keep them in their smriti, उनको अर्थ in their memory. लेकिन शब्द उनको पता है, Even if they don't know the meaning, परंपरा they know the words. So that is a Shabdik parampara. प्रकार की परंपरा से भी वेद की Here we are not talking about that parampara, of course, but that parampara is also important because Vedas were received through that parampara. But here Bhagavan is talking about the parampara of knowledge, आगे तक चले, about the meaning of those words. That parampara should continue. And this parampara can continue only when the person hears and understands properly उसका फिर अनुभव करे, and then experiences it. हमें साधना करे, So for that we have to do sadhana. और वहीं पर समस्या आती है क्योंकि And there the problem lies there only because sadhana involves hard work, austerity, control of senses, लोग हैं उनके यहाँ and especially चीजें उनको उपलब्ध हैं, kings had so much उनको इंद्रिय wealth, affluence. काम है, So for them, controlling senses was even more difficult. So if the kings become entangled in sense enjoyment, लुप्त हो जाएगी। then the parampara of knowledge will be lost. कहा था कि Because Bhagavan had told earlier only, गुण समुद्भव महासनो महापापम विद्येनम है वैरणम, तो ये जो कामनाएं हैं ये फिर so हमारे these ज्ञान, desires, विवेक they को ढक लेती है, they cover our knowledge, our wisdom, our sense of discrimination. तो फिर व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, Then the person becomes bewildered and loses his discrimination. है जिसकी वो बात कर रहे हैं, And the yoga that Bhagavan is speaking of, की है it is actually discrimination only. कि मैंने इसको बोला, Because he is telling Proktavan means I spoke. आगे भी और So what he spoke was same only what he spoke till now. जो बोला है वो And further also he has more to speak. But whatever he has spoken of till now he has spoken about sense of discrimination between spirit and matter फलों में आसक्त ना होकर काम करना चाहिए, and how we should work without being attached to the results of karma. पर अभी तक उनका बल रहा है, So this is what he has और ये विवेक stressed till now. है, And we all have this sense of discrimination हर एक व्यक्ति जानता है because कि मैं every person knows अलग हूँ, that I am different. I am different from everything else. वह मेरे चारों तरफ है, Whatever is there around me, I am different from all that. मैं परिवार में अपने परिवारीजनों से भी भिन्न हूँ, In my family also I am different from all other members. थोड़ा And then और गहनता से विचार करें, if we reflect more carefully, then we'll understand that when I sleep at the night, मतलब मैं अपने then I am not aware about my body also.
That means I am different from my body also. हमारे अंदर सबके है स्वाभाविक So है, we all have this sense of लेकिन अज्ञानता के discrimination कारण ये within ढकते हैं। us. But due to desire, it gets covered. और फिर हम देह में आसक्ति के कारण And इंद्रियों then, में due लिप्त to होकर attachment to the body, इसका we योग भी become नष्ट हो जाता entangled in sense enjoyment. And then है। तो ये है कि इसको परंपरा से the सीखना parampara पड़ेगा। of knowledge is lost. तो Another परंपरा point is that सीखने की this और has to be learnt from parampara. So then the question is मतलब why यही है कि इसको there सीखना पड़ेगा। why deviation happens in सीखने का parampara? मतलब ये है That is because you have to कि actually learn it पहले से from the parampara, not जो that चीज़ें आपको like उपलब्ध हैं डू इट today योरसेल्फ, you have nowadays lot जो of है this do it yourself पुस्तक ले लीजिए, methods. कुछ You वीडियो take उपलब्ध हैं, books or some videos are there, कुछ प्रवचन उपलब्ध हैं, उनको or some सुनिए, lectures सुनकर आप are सीख there. कर सकते हैं। Hear that आजकल and you प्राइमरी can do it एजुकेशन में yourself. आपको मिल जाएगा। Almost for everything nowadays you will find do it yourself लेकिन ये techniques. विद्या जो है ये स्वयं करने वाली है नहीं, इसको सीखना But पड़ेगा। this knowledge is not a subject of do क्योंकि it ये yourself. आध्यात्मिक विद्या It है, has to be भौतिक learnt. विद्या नहीं है, ये शरीर It से is जुड़ी not हुई है। material knowledge. It is बाकी जो spiritual ज्ञान है knowledge. It is not related to कि body. आप इसको स्वयं कर सकते हैं, All the other knowledge वो for which शरीर it is संबंधी said you can do it yourself, they are all भौतिक related ज्ञान to है। body, but they are, ये that is ज्ञान जो है material ये knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान है, But this knowledge is spiritual और knowledge. इस ज्ञान का हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, हमें अनुभव नहीं But है, we do इसलिए not इसको have सीखना any पड़ता है। prior और samskara इसको of this सीखने के लिए knowledge. जो व्यक्ति We have to पढ़ learn उसी it, से आप इसको सीख सकते हैं, केवल पढ़ने and से you नहीं can सीखा जा learn it पाएगा। only from one क्योंकि who जब तक knows. पढ़ेंगे By self study, we तब तक cannot नहीं understand समझेंगे, it. Because if you जब do तक self सीखा नहीं है। study, then we will derive only that meaning what we already know हम it. जब भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं या नई Whenever चीज़ we जानते learn हैं something new or we read तो something उसको new, हम अपने पूर्व संस्कार से ही then समझते हैं। we understand or interpret it according to क्योंकि our हमारे संस्कार previous तो हमारे samskaras only. स्वभाव के तो हैं नहीं। Our अगर previous samskaras are हमारे not संस्कार like साइंस या that of मनोरंजन the पूर्वक spiritual होते knowledge, because if it would have been like तो that, बंधे क्यों हैं? we would not have even taken इस birth. बुद्धि की We would आवश्यकता है। already have been liberated. Then why तो do we need हमारे to अंदर learn itself? इस योग के, इस ज्ञान के So संस्कार नहीं है। we do not have the samskaras इसको of this अगर हमको gyan, सीखना है of this yoga of तो knowledge, of जब wisdom. इसको सुनेंगे, So we have to जब learn it, सीखेंगे and when we तो learn उसको it, when we समझेंगे hear भी and we अपने learn it, संस्कारों के अनुसार ही। and when we understand, we will understand it according to our samskaras यहाँ पर only. ही समस्या आती है, So this is where the problem lies. क्योंकि जब तक जो सिखाने वाला है वो कितना ही प्रयास करे, वो शब्दों का प्रयोग करेगा सिखाने के लिए, Because the teacher, और उन no शब्दों matter का how much he has to teach जैसा वो by using लेना words चाहता only, है and the meaning that he वैसा wants वो to नहीं सीख convey पाएगा। through those words, if तब we तक do वो not अपने take अनुभव that से ही बात meaning, करेंगे, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग but तो हम भी करते हैं। we तो गत्वा वचन take the वही meaning according to करेगा, our वो शब्दों experience का only. प्रयोग करेगा The जो हमने teacher जो सुने हैं, जिनको हम will जानते हैं। use words and we will hear those words अगर which ऐसी we चिंतन already नहीं know. करता है जिसका If he जानता है, uses such words तो which आप we उसके don't लिए know only, then we will not even able to understand what he is speaking. और अगर हम उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं और वो If हमको we do not know समझाएगा the तो meanings हम of नहीं those समझ words, पाएंगे, and if क्योंकि he doesn't जो explain the meaning, समझाएगा वो how हमको shall we understand? उसी से समझा सकता है जिसको हम जानते हैं। Because he can explain using those words इसलिए only that we ये already समस्या know. है आध्यात्मिक That's मार्ग why की, on the spiritual कि हम path, लोग this उसको is नहीं a समझ big जानते हैं। problem, that whatever we तो want to उसको नहीं understand, समझने के लिए हम अपनी शब्दावली का ही प्रयोग करेंगे, in अपने order to संस्कारों understand, का, we will use our vocabulary only, और we will हमारे use our samskaras संस्कार only, हमारी and शब्दावली our से ही होते हैं। experience, our samskaras, they are तो all हम आध्यात्मिक material. मार्ग कैसे समझ सकते हैं? So how can we understand इस spiritual समस्या का subject matter समाधान using these बहुत words? सूक्ष्म है, और इसी के So कारण the solution to this ये problem नष्ट हो is जाता है very subtle, समय के and पूर्व this is why इनका the प्रयोग नहीं parampara किया, gets lost. कि बहुत समय बीत गया है और इस समय के बीत जाने के कारण ये Because परंपरा नष्ट Bhagavan होती said प्रतीत होती that है। lot of time has passed and this parampara has been किसी lost. प्रकार से विच्छेद आ गया, तो उसका मूल It कारण is यही like है। it has broken. So this is the main इस reason. परंपरा को रखने के लिए So in order to एक maintain the उपाय है, parampara, then one thing जिसको कहते is हैं श्रद्धा।
required, that is called Shraddha. अभी श्रद्धा बड़ी अलौकिक चीज है। Now this Shraddha is जब alaukik. श्रद्धा होगी तो फिर व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार उस बात को पकड़ सकता है। If Shraddha is there, then the student can catch hold of that knowledge based on the Shraddha. And this Shraddha is not material, it is जैसा हमारे शास्त्रों में Shastriya, it वर्णन is है, spiritual. So, यस्य like it देव is said in our Shastra, तथा देवे तथा गुरु तस्य तथा प्रकाशन्ते महात्मा, कि जैसी देवता में भक्ति है वैसी भक्ति जब गुरु में होगी, the kind of bhakti which is there in the Devata, that level उस of समय फिर ये जो bhakti or आपको Shraddha, if you have in the Guru from whom you are learning Shastra, then whatever you are hearing, था प्रकाशन थे, तो फिर ये प्रकाशित होते हैं आपके हृदय, whatever you are hearing, its ये artha अलौकिक will चीज be है, revealed in the heart. जो This is साधारण ज्ञान प्राप्त something करने की divine, प्रक्रिया से भिन्न है। which is different from तो the ये ordinary रहस्य है, process of receiving knowledge. इसको अगले श्लोक में This भगवान is जिस the समय में mystery, which ये will रहस्य Bhagavan will बताएंगे तो explain in the next verse also. He will say that this is rahasya. किया है अगले श्लोक, तो यही रहस्य He है। himself uses the word rahasya अपने in the गुरु next का रहस्य verse. है वो ये है So this is the कि secret of शिष्य को receiving this अपना knowledge, हृदय that का the नियंत्रण करना disciple पड़ता है। should have one-heartedness with the जैसे Guru. बिजली घर से आपके घर Like में आती है electricity तो उसका जो लिंक moves to वायर your से होता home, है, it is connected directly through the wire. अगर वो लिंक बीच में टूट जाए If that link तो बिजली नहीं breaks, आएगी। then the electricity will not तो be इस प्रकार transferred. ये लिंक रहता So है हमारे similarly, साथ, और गुरु Guru भी there वही is होना चाहिए जिसका गुरु है वो there is परम link, and Guru also should be such who has his own Guru, and that Guru has his own Guru. जाती है। So then this knowledge flows in an तो मनुस्मृति में uninterrupted एक fashion. श्लोक है, मंत्रे So in Manusmriti there is a verse. ये भेषज गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। उन्होंने कहा है कि जैसी आपकी So भावना, in भावना मतलब श्रद्धा, Manusmriti उसी it is अनुरूप saying आपको सिद्धि मिलेगी, that यानी कि you will get the result according to your जैसे यहाँ Shraddha. हम अपने गुरु के विषय के बारे में कर रहे हैं, तो देवता हो चाहे द्विज हो या मंत्र हो या So whether तीर्थ it हो, is Devata, the Dvija, the अगर उसमें mantra, श्रद्धा नहीं the है तो वो tirtha, काम नहीं करेगा। if we do not have Shraddha in the mantra will not show its effect. सब जानते हैं कि Tirtha, we stay in वृंदावन Vrindavan, अपना we know that आध्यात्मिक this is the धाम है, personal इसलिए dham वहाँ पर of व्यर्थ में जाने Bhagavan. से कभी जाते नहीं। लेकिन Bhagavan अगर हमारी is श्रद्धा नहीं है तो eternally वो living ऐसा here. लगेगा जैसे But if we do not have कुछ नहीं है। Shraddha, we will see this dham like an इसलिए ordinary हम बार बार ये place. कहते रहते हैं कि क्या And that's why people come विशेष here बात है and यहाँ की then गंदगी है, complain what is special in this place. There is so much of क्योंकि pollution, dirt. जो इसके नीचे छुपा हुआ है वो तो हमारी Because what is hidden beneath all this, वो हमारी श्रद्धा के अनुरूप ही होगा। we cannot जैसी experience आपकी that. भावना We will experience that only according to our Shraddha. सिद्धिर भवति तादृशी, तो जैसी भावना जैसी श्रद्धा होगी So, according to your bhavana, वैसा ही Shraddha, हमको अनुभव होगा, वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। accordingly you will और get the experience, whether it is of mantra or tirtha or guru or इसलिए shastra. हमारे यहाँ गुरु That को is why इतना महत्व दिया गया है in our कि भगवान ने culture, in our गुरु को tradition, गुरु जानिए, guru is given such a great importance. आचार्य हम Bhagavan आचार्य says रूप में that समझाते हैं। I am the acharya. तो इसका दुरुपयोग भी Bhagavan होता है himself appears as और acharya. इसका भी लाभ And होता है। this verse is वास्तव misused में also. Many people take सिद्धांत undue यही advantage of दिया this गया है, verse. But the इसका Siddhanta is this कोई only. दूसरा रास्ता His नहीं है। method is this only. There is no other way. और अगर हम इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि इस And प्रक्रिया में if we समझना do not मुश्किल है, understand this, लोग आध्यात्मिक it's मार्ग चलते हैं difficult. लेकिन In वास्तव this में path, it is very difficult to अगर have देखोगे तो उसमें Shraddha. People come on श्रद्धा this नहीं है। path, but if you check properly, you will असल see बात ये है, there is no proper Shraddha. This is सुनने the में आपको real थोड़ी कठिन point. लगेगी लेकिन It वास्तविकता may ऐसी है। sound very और उसके कारण bitter, से फिर but this हमको is the bitter जो truth. परंपरागत ज्ञान And है that is why, ये प्राप्त नहीं due to होता। lack of Shraddha, we do not get this knowledge in the तो इसलिए parampara. हमारे गुरु महाराज बार बार इस बात को That's कहते why थे, प्रभु my Guru Maharaj always used to say एकीकरण करना पड़ता है, that Prabhu, you have गुरु to ऐक्य स्थापना करनी establish पड़ती है। one-heartedness जैसे with ही the Guru. एक धारा, So it is जैसे बिजली का करंट like होगा, the flow of the उसको जब current. तुम मिलाओगे तार के साथ में So तभी if you बिजली connect उत्पन्न the होगी। wire, तो उसी then the प्रकार से electricity will ये flow. ज्ञान प्राप्त करना Similarly,
this knowledge is received in the parampara. So why did Arjun receive knowledge? Because Arjun, like Bhagavan will say in the next verse, कि आप मेरे भक्त हैं, that you are my bhakta, you are my sakha. इसलिए ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा That's why है। तो you are इसलिए qualified to कहते receive हैं this knowledge. सैव मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तम। आज मैंने वही अति प्राचीन योग Translation: तुमसे I कहा have spoken that very ancient yoga to you today because you are my devotee परम and रहस्य friend. है। It is certainly ये the देखने में supreme श्लोक secret. बहुत आसान है So, और this एक verse में appears to be very सुना भी simple, होगा, and we might have heard it thousands of times and recited it thousands इसको of समझना times. भी एक रहस्य है। But understanding this verse is also a भगवान जो है rahasya, it's a रहस्य शब्द secret. का प्रयोग उस ज्ञान के लिए Bhagavan कर रहे हैं कि is using the word rahasya or ये secret रहस्य है। for this ये knowledge, रहस्य वाला श्लोक बता रहे हैं, but ये श्लोक this ही एक verse रहस्य है itself is कि also a हमको समझ secret, में आ जाए कि वास्तव में क्या that कहना we चाहते हैं। understand it or know that what is he तो exactly कहते trying हैं कि to वही say. योग जो मैंने विवस्वान को कहा था सैव, So he says that same yoga वही which योग I मैंने had अभी told to बताया। Vivaswan, meaning तो the इसका same thing. सत्य कुछ नया He is not नहीं telling है, something new because truth is neither old nor new. एक जैसा ही रहता है। नास्ति Truth is परिवर्तनम always same. यथा भावो विद्यते सतः, सत्य तो बदलता नहीं है। Truth does not तो उसी change. सत्य को So वो that बता रहे same हैं, truth, he is telling that same truth कोई नया नहीं है। बहुत बार लोग आकर is कहते हैं nothing new. Many कि times आपका people क्या come कहना and है। say that what is your opinion regarding this? मेरे मत की कोई कीमत नहीं है, So my opinion has no value क्योंकि सत्य मेरे मत पर निर्भर नहीं करता है। किसी because लोग truth बहुत does कहते not हैं depend on my बहुत opinion. लोग इसको मानते हैं इसलिए ये ठीक होगा। Truth does not depend on majority opinion. इससे सत्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको एक व्यक्ति माने चाहे लाख व्यक्ति माने, Whether one person accepts the truth or lakhs of people accept the truth, बहुत लोग मानने लगेंगे truth सत्य remains को तो वो same सत्य only. नहीं हो जाएगा, Truth does not become truth वो झूठा just हो because जाएगा, majority वो accepts झूठ it, हो जाएगा। and it does not become false if nobody is इसलिए accepting दूसरे it. शब्दों में कहा कि So रहस्यो Bhagavan has told very यथा clearly भाव विद्यते सतः, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो there is अभाव never है any वो abhava सत्य है। of truth, and what is having abhava, it cannot be तो truth. इसलिए कहते हैं सैव मया ते अद्य योग प्रोक्त, वही योग मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पुरातन है। So he is पुरातन telling मतलब Bhagavan is telling that I am telling that पुरानी है, same yoga to पुरातन you, है चीज है। which is very ancient, कहते हैं meaning it is पुरानी very है, important. 1000 साल पुरानी है तो बड़ी Like people महत्वपूर्ण say, है। this is something of thousands of तो years अर्जुन old, so it is very important. अर्जुन के It has a हृदय lot में of उसका value. महत्व So डालने के point लिए is ये that बोल रहे हैं। in order to convey to Arjun that आप whatever Bhagavan is पुरानी speaking is so important. चीजें हम खरीदते भी है ना, कोई पुरानी पुरानी Nowadays, many people buy the ancient relics, artifacts, उसके लिए लोग very लाखों old. रुपए देते हैं। So for that, they pay ये in योग अटल millions. से पुराना है So this yoga is और the oldest, बिना मूल्य के मिल रहा है, and you are इसको getting तो it हमें for free. दौड़ कर ले लेना चाहिए। So we should grab तो it किसी at का the सोना है, earliest. किसी का कोई कपड़ा है, किसी का कुछ है, तो उसको कितना पैसा दे के खरीदते हैं। People pay so तो much उससे to हमको buy कोई लाभ नहीं somebody's होगा। ancient letter, ये ancient अहंकार है कि हमारे पास है, very old clothes or ये तो something, आपके and they are जीवन not में going to आएगा get any benefit out of that. It's just an ahankara आगे वाले that I जन्म have में, an ancient और artifact, सबसे something. पुरानी चीज है But this is कि most अव्यय है। important. जैसे हम It is the पुराने हैं, oldest. भगवान पुराने, Like ऐसे we ये are योग भी old, जितने पुराने हम हैं Bhagavan, this उतना ही पुराना similarly ये this योग है। yoga. So this yoga is as ऐसी old as कोई भौतिक Bhagavan, चीज नहीं है जो इतनी पुरानी है। and there is no material object which can be so तो old. भगवान यहाँ कहते हैं कि मैंने इसको So here कहा, Bhagavan is saying that I योग spoke प्रोक्त है this. पुरातन है, कि मैंने आपको कहा। तो क्या उन्होंने सब कुछ कह दिया है? अर्जुन को कह रहे हैं ना कि ये जो So पुरानी has चीज मैंने he आपको कहा spoken everything to Arjun? Because he is तो telling that I इससे have अधिक है spoken. इसका, So point और is भी that बढ़िया है अभी what तक जिसको Bhagavan has कहा है। spoken till now, that is the आगे बताएंगे तो essence. और भी बहुत कुछ Although in the इससे आगे upcoming स्पष्ट chapters होगा। he will speak many things, but this और all he has already conveyed the जो essence, लुप्त हो गया था उसको प्रकट कर and रहे हैं। whatever was lost, और he is इसलिए revealing ये it बोलते हैं कि again. ये रहस्य है, और रहस्य वही होता है जो He आप says किसी this को is नहीं rahasya, बताते। secret, and rahasya is that और which you जिसको do not बताते हैं want उसको to गुरु reveal to समझते हैं। everyone. गुरु That's वो why in होता है Bhagavatam he said कि गुरु जो है
की बात that the guru, प्रिय शिष्य he को ही देता है, reveals सबको नहीं the बता सकता। secret in his heart ऐसा to नहीं है his कि उसका dear कोई लाभ नहीं disciples होता, only. It is not that he does not want to tell सबको to बताने का everyone, कोई लाभ नहीं है, but there is no use इसलिए of पहले वो revealing the secret समझेंगे of his heart to और फिर उसका everyone, दुरुपयोग because करेंगे। they will not understand that ऐसे and they किसी will को तो rather बताना भी नहीं चाहिए, misuse that knowledge. That's उसकी why uh, विकृति everything उपयोग should करेंगे। not be told to everyone. इसलिए मनु जी Otherwise, एक और बात people will कहते हैं, destroy that. ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् That's नान्याय why in Manusmriti it is also said. जाननपि भी मेधावी लोके जड़वल आचरेत, जड़वल लोके आचरेत। तो कहते हैं कि जब तक कोई पूछे ना तब तक बताओ ना, So he says और that अगर कोई as गलत long पूछ as रहा one है is not तो asking, न्याय don't से speak. पूछ रहा है। And if somebody is asking in the wrong way, then also don't speak. जानते हुए भी ऐसे बर्ताव करो जैसे आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं जानते Knowingly also behave, even if you know the truth, तो कुछ still गड़बड़ behave है। like a fool, as if I don't know anything. तो उसका कारण यही है, So the reason is this ऐसे only. श्लोकों को भी आजकल लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। वो कहते हैं देखो ये ब्राह्मण People लोग ज्ञान को देना नहीं bring चाहते थे, wrong meanings out of these verses इसलिए also. उन्होंने They say शास्त्र that, में लिख see, दिया। the लेकिन Brahmins did आजकल not used to want to reveal the knowledge to बनाने की you. They kept टेक्नोलॉजी it secret. उसको छुपा कर So रखते like हैं, nowadays you see this the technology for making nuclear bombs, that technology is kept a secret. It should not be leaked to the wrong people. If they get this technology, how much havoc they can create. So very limited number of people have that जो technology, में है उनसे कितना डर रहता है। अभी भारत and those who पाकिस्तान have युद्ध that, 3 महीने there से is so चल much रहा है, fear. So India Pakistan war was there in 3 days. The war was दोनों तरफ से ही खतरा there है, was चाहेंगे ceasefire तो वो भी करेंगे। because the fear of nuclear war was there. वैसे ये ज्ञान तो न्यूक्लियर पावर का भी बाप है, Similarly, so this knowledge is much superior even to पावर nuclear तो power. भौतिक ही है। Nuclear power is still material इसलिए only. इसको छुपा कर इसलिए रखा जाता है कि लोग So इसको that's why this knowledge is kept a secret, और कोई so that unqualified इसलिए people should इसको not रहस्य misuse कहते it. हैं। That's why it is designated तो as रहस्य को a प्राप्त secret, करने का तरीका rahasya. तो वही है So this, what is the method of कि किस तरह getting से this secret knowledge? आप अपने हृदय से जुड़े। जैसे That परिवार is में to हम लोग connect the आते हैं, heart सबसे with the पहली बात guru. यही होता है Like in family, कॉन्शियस कम्युनिकेशन। in relations, you should have conscious कॉन्शियस communication. कम्युनिकेशन आप तभी कर सकते हैं ना जब आपके Conscious दिल से बात communication is निकले। only possible when your heart is open, when the heart is इसको open बोलते हैं from हार्ट both टू हार्ट sides. टॉक। That is called heart to वो heart तभी talk. संभव है ना जब आपके That is अंदर only possible श्रद्धा है, when विश्वास है। both have shraddha in each other, अगर मैं they आप have पर faith in विश्वास each नहीं other. करूंगा, If I don't अगर trust पहले you, if I have कि आप मेरा fear from you कुछ that शोषण कर सकते हैं, मेरा you फायदा may उठा सकते हैं, exploit तो मैं me, अपने you आप may को छुपा कर misuse रखूंगा। me, then I will protect myself अगर from you. आपसे कोई डर नहीं है But if I do not have any कि fear आप from you, मेरा कुछ नाजायज लाभ उठाएंगे, that you will take undue advantage of तो उसको me, बोलते हैं then हार्ट I टू will हार्ट speak from my heart. That is called revealing in confidence. इसलिए आपस में जब प्रेम होता है तो लोग दो So लोग when there is love अपने among हृदय की बात को प्रकट करते हैं। two people, then they वही बात express यहाँ पर their भगवान कह hearts रहे to हैं, each other. करोसि में So that's संवादम what Bhagavan is saying here. रहस्यम ही एतद उत्तमम, कि आप मेरे भक्त हो, Bhagavan आप is मेरे telling that सखा you हो, are my bhakta and you are my friend. इसलिए मैं आपको ये उत्तम That's रहस्य why दे I रहा am हूँ। speaking this supreme secret to you. तो सखा उसी को बोलते हैं, सखा मतलब निर्निमित्त हितकारी, So Sakha जो means दूसरे का who is भला a चाहता है well बिना किसी wisher निमित्त के, बिना किसी without कारण के, any reason, बिना किसी बदले की प्रतिक्रिया की भावना without रखते हुए expecting दूसरे का anything भला in चाहता है, return, उसको expecting सखा anything बोलते in हैं। any benefit in इसलिए return. That is called Sakha. डेफिनेशन समाप्त हो गई, अब फेसबुक Nowadays, फ्रेंड होते हैं। there is no real Sakha also. डेफिनेशन People शब्द are ही खत्म हो mostly गया। Facebook friends. So the word friend has सखा lost का its मतलब यही है, original जैसे meaning only. खालती खादती थी सखा, साथ में मिल बैठ कर So खाएं Sakha means खाएं, who sit together, हृदय eat, से play, reveal their hearts. मिले They हों, are one in तो उसको heart. सखा बोलते हैं। That is called भक्त Sakha. का मतलब जो उनके प्रति एकदम श्रद्धा का भाव रखता है। श्रद्धा नहीं And होगी तो Bhakta means one who has a very, उनके प्रति who हृदय keeps में प्रेम है, a feeling of great विशेष Shraddha, whose heart is filled with love. That is called भावनाएं हैं, Bhakta. प्रेम है,
having love for Bhagavan, विश्वास है कि ये having मेरे सब faith कुछ on है, Bhagavan that he is all in all for भगवान me. इस बात को जानते हैं So Bhagavan knows this, और इसलिए उसको ये बात याद दिला रहे हैं। and so Bhagavan is इसलिए reminding Arjun that because इसलिए you are my bhakta, you are my friend, I am speaking this. So what was the need तो to speak सभी this? जानते हैं कि अर्जुन उनका सखा Everyone है, knows that Arjun is Bhagavan's friend. उनका इतना गाढ़ सखा है कि जब In भगवान fact, बोले Arjun was such a close friend एक अक्षौणी that नारायणी when सेना है Bhagavan said that on one side I have my Narayani's army and on one side I am there बीच में without any भगवान को चाहिए, weapons, so whom do you want to भगवान choose? हमको आप चाहिए। So Arjun chose Bhagavan. तो ये तो युद्ध का समय था और उनके पास में कौरवों से सेना बहुत कम थी, So the war was impending तो and उनकी सेना ले सकते थे, Pandavas had very less or limited army तो उन्होंने सेना लेने से मना कर दिया, compared to इसलिए Kauravas. तो भगवान ने But कहा Arjun refused to take the army. Arjun chose Bhagavan. कोई परवाह नहीं है, So आप Bhagavan नहीं है said तो that, but कोई I नहीं will है, not जब fight. आप नहीं है तो So, कुछ but नहीं Arjun है, said not to worry. सेना If लेंगे। you are there, everything is there. And if you are not तो there, ये इनका even if I have a whole army, it is मृतम useless. न जनम न So सुनम this न is भूताम न symptomatic of Arjuna's bhakti. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे Like Sri Chaitanya Mahaprabhu said कि केवल हमको that आप ही चाहिए और कुछ I नहीं just चाहिए, want you, चाहिए nothing केवल आप else. ही चाहिए। Bhakti means I want you only. तो इसलिए ये तो सभी जानते ही हैं, तो यहाँ So भगवान everyone already बोलेंगे knows about this. So why is Bhagavan अगर आप मेरे मित्र speaking हैं, about this? That you are my मैं friend, you are my आपको बता दूं devotee. कि आप मेरे मित्र हैं, If you are my friend, why do I मेरे need to भाई हैं, speak that you are my बोले कि friend? आप मेरे भाई हैं, If you are my brother, do I बोले need to बोलते say ही that क्या you है are my brother? कि आप मेरे If भाई you हैं, are somebody's husband, does the wife need to बाकी आप say चाहते तो that you are my husband? What is new about that? Everyone knows. तो ये कहने का मतलब ये है कि So the अपने point हृदय is को खोल रहे हैं that वो, Bhagavan यही is हमको opening शिक्षा यहाँ दी जा रही है Bhagavan is opening his own heart कि हम जब and आपस he is में teaching that वार्तालाप करते when हैं we discuss तो किस or तरह do से any किसी conversation के मन among में each other, how एक श्रद्धा का भाव पैदा करें। we generate the Shraddha in the other person's ये heart. कॉन्शियस कम्युनिकेशन का फार्मूला है, So Bhagavan is giving the formula तो of भगवान ये कह रहे conscious हैं, ये communication. इसलिए कह रहे हैं कि What इसको Bhagavan सुनकर is speaking अर्जुन here, बोले कि अच्छा ये that मेरे when Arjun hears this, सखा हैं, मित्र हैं he will और ये जो feel कह रहे हैं that the वो मेरे person भले की कहेंगे, क्योंकि who is सुना तो speaking आपने will इससे speak पहले for भी my welfare only कि because he मेरे सखा हैं, recognizes me as his devotee, his friend. नुकसान हो आपका तो Because मेरा friend will not cause harm to ऐसे you. तो वो तो सखा हो ही नहीं सकता, वो तो That वही है। cannot be a friend, that is enemy. और भक्त के प्रति भगवान भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि उनका Even दुश्मन है, Bhagavan will not भगवान तो कहते हैं कि भक्त से speak कोई like this about है Bhakta. नहीं। तो ये कहने का Bhagavan मतलब says यही है that nobody कि is dearer to भगवान me उनके than my हृदय को devotee. खोल रहे हैं। So the point that हालांकि Bhagavan हमारे is हृदय making जो is है that वो अर्जुन ये हमेशा Bhagavan is कहते ही हैं opening Arjuna's कि heart. ये Although Arjuna's वार्तालाप heart is opening only, वार्तालाप but होता है, Bhagavan is इस स्तर teaching पर us होता है, that dialogue और जब conversation happens इस at this प्रकार का level. स्तर होगा And when this will be the level, the platform ज्ञान of की dialogue, धारा जो है then वो the प्रवाहित flow होगी। of knowledge will take तो जो place. भी भगवान बोलेंगे वो उनके हृदय में सीधा प्रवेश Then होगा। whatever Bhagavan will speak, तो it will directly enter Arjuna's heart, प्रकाशनते ही महात्मना, as it is said in the उसके Upanishad कथित that अर्थ जो हैं Prakashante वो Mahatmana. कथित अर्थ जो हैं वो उसके हृदय में सीधा प्रवेश So करेंगे। whatever is being तो spoken, ये its अर्थ artha will जिसको directly enter समझना Arjuna's है heart. Now Arjuna कि is ready हमारे अंदर इस to प्रकार की श्रद्धा नहीं है, accept that knowledge. Until and तो unless जब we भी have कोई this Shraddha, बोलता है तो then what हमारी happens when somebody speaks? बुद्धि पीछे Then से our कुछ mind, ना our कुछ उस buddhi, पर विचार करती रहती है, क्या then वास्तव में ऐसा है, सच starts बोल रहा है कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, applying discrimination on that. Is this correct? It is wrong. तो What is correct? जब What तक is ये wrong? स्थिति It will रहेगी always bring this ज्ञान logic. प्राप्त होता So नहीं as है। long as this stage will be there, we will not और receive जब the हमारा हृदय जो knowledge. है इस स्तर पर खुल जाता है And when our heart will open at this तो level, फिर ज्ञान का प्रवाह चलता है। then the flow of knowledge will take तो place. इसी के लिए भगवान So यहाँ पर for this reason only, here इस शब्द को बोलते हैं Bhagavan is कि वो speaking पात्र को तैयार कर रहे these हैं। words, meaning that he is making Arjuna ready. अगर किसी के
to receive this knowledge. If you have a vessel and it is already filled with something, then whatever we will fill inside that, it will overflow. It will not enter inside. And this is what usually happens. We hear a lot, but how much are we able to imbibe? Today in this world, what is available in maximum quantity and for free, that is knowledge. The amount of knowledge that is available in the world today, it was never available to such an maximum extent and free in your own home. But but how much knowledge is being misused and disrespected and rejected in today's time, that also never happened earlier. Earlier, a person used to hear something very small also, he used to hold on to it. In childhood, we used to hear that somebody said, I went here or I went there, and there I learned this from this person. And then they hold on to it. Today, everyone knows about so many things, meaning now it has no value only. So, nobody applies it in his own life because we imbibe that only what we consider important, beneficial for us. If we think that if we use it, if we apply it, it will be helpful for us. So this is the condition. So here, what Bhagavan is saying, that this is the secret. You are my devotee, you are my friend. Whatever words Bhagavan is using, that is to make Arjun the patra, the qualified candidate to receive this knowledge, so that he hears this and gives importance to this knowledge. In order to understand the subject, you can ask questions, but not to disagree, and that you have a difference of opinion. Then what will happen? You will simply keep arguing. There also may be that you want to receive knowledge, but here Bhagavan is directly giving everything ready made. So this verse appears to be ordinary, and even the previous one, but it is extremely important because it teaches us how we should communicate and how we can have good relations. This is a very practical knowledge. Until and unless we have such level of tuning up with our family members, we will not have good relations. Then every person will uh, stay limited, and he will not open his heart, and he will think that if I speak this, what will happen? If I speak that, what will happen? There will be a sense of fear, insecurity. But here it is not like that. With people in the outside world, you can maybe behave with that like that, but at least there should be one person in our life with whom we can talk in a very very open way. And with guru, you should be completely open. Otherwise, you will not benefit by receive the benefit of knowledge from the guru. So if we have to receive the knowledge from the guru, we should have this type of feeling, what Bhagavan is speaking here. Then you will be able to receive knowledge from the qualified guru, because qualified guru will be that only who is representative of Bhagavan, and who can take this knowledge forward, who has no other purpose. He is a representative of Bhagavan. So Bhagavan appears in this world without any selfish interest, without anything to obtain for himself. So Guru is also like that. So as Bhagavan gave the example of Vivaswan, Surya, the sun
Sun gives light without तो गुरु भी ऐसा ही होगा, expecting any benefit in कोई return. गुरु होगा So guru is the qualified guru is also निमित्त ही like काम this करेगा। only. अगर उसके Guru अंदर does not कुछ want anything, तो फिर वहां पर any benefit परंपरा in return. प्रभावित हो जाती If guru desires any benefit in है। return, ऐसे ही then the parampara becomes deviated. This is how paramparas become deviated when the guru is not qualified शिष्य फिर उससे ज्ञान and प्राप्त नहीं कर सकता है, shishya, the disciple और cannot गुरु obtain योग्य है knowledge और from शिष्य the guru. योग्यता नहीं है तो Or संभावना है कि शिष्य सुधर जाएगा। if the guru is qualified but disciple is not qualified, there is a possibility the disciple can become qualified by the mercy of the guru, होता क्या है and then he can get the knowledge. कि Otherwise, what happens सुनते is हैं गुरु से, we hear from the शब्द guru, तो गुरु के होते हैं the words are of the guru, और अर्थ अपना होता है। but the meaning what we apply is our own. तो यही परंपरा में विकार है। So this is the deviation in the parampara. Then the parampara becomes शब्द भी lost. गुरु के हों और अर्थ भी So गुरु the के word हों should be also of the guru तो तब and the meanings परंपरा should चलती also है। be according to the guru. और Then जब the शब्द parampara गुरु के हैं continues. और अर्थ में अपना लगाता हूँ तो फिर परंपरा विनष्ट हो But जाती the है। words are of the guru and the meaning तो ऐसा is होता है, according to myself. बहुत बार होता है, प्राय होता है ऐसा ही कि So लोग this is पूछते what हैं often happens. People ask तो questions. वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो उसका उत्तर जानना They are चाहते not हैं, asking because they want the answer. उनको मैं वो They are बताता हूँ asking in order कि so that they can get a validation from या me of कुछ the concept that समस्या they लेके already उस like, समस्या का समाधान or भी लेकर they आते will हैं। come with a problem and they also bring a तो solution एक to the problem, मोहर and they लग just जाती है want उन्हें that solution to कि be मतलब rubber stamped by the guru. गुरु कोई भी हो जो भी है उनकी Whatever, समझ whoever guru स्पष्ट is, लग जाए कि हाँ they भाई should गुरु ने get ऐसा कहा है, their idea वास्तव में validated and गुरु ने rubber जो कहा stamped by the नहीं guru. है, So actually, guru has वो not told जानना that, चाहते हैं। but they want it तो वहाँ पर to क्या be होता है, validated by the guru. वहाँ शब्द भी शिष्य के और अर्थ So भी शिष्य के then there होते हैं। what happens? The words are of the guru. तो एक तो ये होता है कि The sorry, the words are of the disciple and the meaning is also of the दूसरा disciple. शब्द गुरु के अर्थ शिष्य का, तीसरी स्थिति So है there are three levels. अर्थ One is योग्य the शिष्य की। words are of the guru, meaning is of the guru. Other is where आजकल में ये words are of the guru, meaning is of the disciple. तो And the third one is अपना the ही words अर्थ are of the निकालते हैं। disciple and the meaning is also of the disciple. तो कुछ And लोग the third one is what I अपना see mostly. So शब्द whatever अर्थ somebody wants से to do, निकाल so लेते for हैं कि that हमारे they शास्त्र will में derive some, they will find out some verse for that. Because our shastras are like kalpataru, तो wish आप जो fulfilling करना tree. चाहते हैं उसका They can fulfill all your desires. So whatever you want to जब do, आप देखते हैं accordingly you find some कि verse. सबके अपने अपने जो मत So हैं you see what you see all around, अनुकूल पड़ते हैं, that तो whatever उस अनुसार ideas वो are शास्त्र fitting according to one's चलते agenda. रहते हैं। So then they find and show तो verses पूछते हैं according to their आपने कहाँ से agenda. सीखा है, But if you ask them from where did you learn this, then they will have no आज एक answer. सबसे बड़ी समस्या समाज में है कि व्यक्ति पढ़ता नहीं So है this is the problem in today's और society. गुरु के People पास do not जाते हैं study. Study और means आप going to guru and विधि getting the knowledge from the guru according to the system prescribed in Shastra. अन्याय न पृच्छता, जो अन्याय से पूछता है मतलब पढ़ता भी अन्याय से है, वो So what पढ़ने Manu के is लिए telling, Anyayana Prichata, meaning तो the उसके person अंदर also is not जो studying to learn. ज्ञान है उस पे मैं एक मोहर लगवा दूं कि नहीं मैंने He's वहां just पढ़ा doing, he's doing that just to give a rubber stamp on his knowledge that I heard from him. He also speaks तो like फिर what I think. नष्ट हो जाती है। So this is how the आज की स्थिति parampara हमारे becomes समाज में deviated. इसी So प्रकार की है। today's और situation in our विशेषतः society is like this only, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में and especially in the sampradaya of Sri Chaitanya इसका एक Mahaprabhu, अलग ही वैभव है, it is to a immense extent, देखने को मिलता है altogether कि different इतने level प्रकार only. के मत You मतांतर see that फैले so हुए हैं, many रीतियां opinions फैली हुई हैं and और हर एक systems व्यक्ति and traditions are there, उसको लगता and है कि यही ठीक है। every person he says that I am right. तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। So we will stop here for यदि today, किसी and को if कोई प्रश्न हो you तो have any पूछ ले। question you can ask. पवन जी पूछते हैं कि Question. गीता के लिए कोई
व्याकरण की पुस्तक का सुझाव दे सकते हैं आप? Can you suggest some grammar books for Gita? क्या मतलब है? गीता व्याकरण की एक पुस्तक होती है Question: what do you mean by Gita प्रेस से, Vyakaran? Gita Press has a कोई व्याख्यान book on Gita Vyakaran, व्याकरण तो आपको जानना but है तो ठीक से व्याकरण पढ़िए, if उसमें you क्या want to learn Vyakaran, you have to learn Vyakaran. What has Gita got to do in that? यही विशेष शब्दों का विश्लेषण चाहते हैं If तो you उसके just want to learn गीता the प्रेस से बहुत बढ़िया derivation of meanings, words of Gita, then Gita Press had a book on that. I don't know if it is still being published or no. इस कौन सा ही छपी है या कहाँ से? रास बिहारी लाल पर मिलती है एक इंग्लिश में, Rāsa-līlā, you can contact. You will get some book on Gita Vyakaran. पर उससे तो तभी आपको तभी लाभ होगा जब आप व्याकरण जानते But that will be beneficial only if you know Vyakaran. If you don't know Vyakaran, then that book is of no use to you. आपने बताया कि Question: जब तक कोई ना पूछे you तो said ना बताओ, that as until लेकिन स्वामी जी if कोई somebody does not बात ask, कर रहा then है, don't answer. मेरी भी But ऐसी आदत है if कि somebody is कुछ making a नहीं mistake, बताता, तो like I also have this habit, क्या I बात करना है, tell good things to somebody if I see he is making mistake. So answer: कोई उत्तरदायित्व नहीं if है, you do not have any कोई responsibility आवश्यकता नहीं है बताना। to correct that person or instruct him, then there is no need. परिवार के लोग हैं तो But if is your family member, then you have a responsibility. कोई कुछ कर रहा But है if you go outside, everyone is doing something. If you keep instructing others, then there will be fighting. ज्ञान की बात चल रही है, But ऐसी here बात नहीं the कि कोई topic is of knowledge. होकर कुछ काम गलत काम कर If रहा है somebody तो is क्या कर सकते standing on the road and doing something wrong, you can tell that person not to behave like that. हैं। ज्ञान से Bhagavan is not talking about all that. He is talking about the parampara of knowledge. पर वैसे आजकल तो किसी को कुछ भी कहना But खतरे as की such, बात है, nowadays, आप it समझ is extremely risky वो to tell कहते हैं anything to स्वामी जी, anyone. नेक से रहा 100 गुना। हाँ अगर वो मानता है तो, लेकिन अगर नहीं मानता है तो आपके साथ अकड़ भी तो सकता है ना। So if the person मेरे को कहने agrees to what you say is okay, otherwise they can fight also with you. Nowadays fighting happens. If you tell something to anybody, then आपने स्वामी there जी will be बताया fighting. कि पहले राजा बहुत अच्छे होते थे, Question: you said that earlier kings were great kings, आईएएस और आईपीएस चलाते हैं स्वामी जी। and nowadays the country is being governed by IAS and IPS इसीलिए जिससे देश officers. नहीं, ये इनके ऊपर भी तो कुछ रहता है ना, आईएएस ऑफिस No, and sir, there are people above these IAS, का है IPS people also. There is the judiciary system. They can control if they want. राष्ट्र का प्रधानमंत्री है The prime minister is there. तो, और ये मुख्यमंत्री हैं तो वो भी तो इनके The ऊपर chief ministers of states are there. They are. आईएएस ऑफिसर ये सब कुछ कर सकता है, वो करते It हैं, is not that उनको पता है IAS, IPS officer will do everything. The connection is there. That's why they take the decisions, उनसे उनको लाभ because the ministers also want that these officers should work accordingly like this. So it's a whole nexus. इसलिए कोई ठीक काम करना चाहता है तो उसको कोई टिकने नहीं देता। That's why if anybody wants to work properly, he'll not be able to continue. स्थिति ये है कि Today's situation is that उत्कोच लेते हैं, उत्कोच जानते हैं ना, संस्कृत में उत्कोच कहते हैं ब्राइब को। so nowadays there is so much of bribery. और अगर कोई एक अफसर ऐसा है जो उत्कोच नहीं If there is an officer who does not take bribe, कहाँ से आ गया, then others do not like that officer, चाहे इसका that he is creating problem. बादला हो जाए। It is better if he gets transferred. So this is the situation today. इसलिए चिदम्बरम ने एक बार कहा था ना कि भ्रष्टाचार को भी कानून बना देना चाहिए। That's why Chidambaram had told once that पैसा तो even corruption should become a law, that at least money will convert from black to white. सृष्टि जी का प्रश्न है, जब हमारी आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं तो वृंदावन Question: की दिव्यता को अनुभव when our eyes are full of shraddha, then we can experience the land of Vrindavan. So is this experience limited to Vrindavan Dham only? Answer: no.
If you have Shraddha, you will see Vrindavan everywhere. यूट्यूब से एक प्रश्न है, मन Next बुद्धि question. इंद्रियां भौतिक हैं, आध्यात्मिक If कार्य mind, भौतिक intelligence, and senses are material, क्या करते हैं? क्या एक व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को इस भौतिक शरीर में अनुभव कर सकता है? can a person experience the spiritual energy in this body itself? So that's why Bhagavan said that if we cannot experience, how to experience then? Since our instrument is all material, and here we are trying to get the spiritual knowledge, so if we cannot experience it by our mind, intelligence, senses, then what is the use of teaching this? And what is the use of Bhagavan appearing here? When Bhagavan came here and people saw him, they saw him with these material eyes only. It is not that they got some different set of eyes. सौम्या जी का प्रश्न है, Next आजकल question. वैदिक Nowadays, शास्त्रों all में information, all rahasya available about Vedic सभी scriptures, अखंडता में which उपयोग can हो be सके, used unwisely with इसके लिए evil हमें सावधानी intentions. बरतनी चाहिए, So, what क्योंकि हमारी precautions should संस्कृति we में take so that we can live in this world आप लोग peacefully? बता सकते हो एक रहस्य जो उपलब्ध है आपको? आपने कहा सभी रहस्य उपलब्ध हैं। You told that all secrets are available. So, my question to you is, can you tell me one secret which is available to you? क्योंकि आपके पास भी सभी उपलब्ध होंगे। Because if they are available, then they should all be available to you only. बताएंगे? अच्छा, रहस्य में चलेगी। चलो, कोई बात नहीं। प्रणाम बाबा जी। बोलिए। हाँ, प्रणाम बाबा जी। एक्चुअली रहस्य मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी रिचुअल्स है बहुत सारे लोगों को पता है, और So by rahasya, what I mean is that all the rituals, etc., which are available. So I am asking you, tell me one which is available. जैसे कि आप केवल लेफ्ट जनरलाइज। हैंड तंत्र, जैसे कि लेफ्ट हैंड तंत्र। हाँ, तो उसमें बताइए ना, क्या पता है आपको? लेफ्ट हैंड तंत्र में आप क्या जानते हैं? So you tell कौन me, सा what do you रहस्य? know in left hand tantra? Which rahasya do you know? मैं नहीं जानती हूँ, बट नहीं, तो अभी आपने इंफॉर्मेशन। कहा ना कि सब But you said that it is all available. I am not adding from my side. You said that today all the rahasyas are available. हाँ, This is what you said. तो इसका मतलब आपको भी So if they are available, they should be available to you also. That's why you said. मेरे को एक बताइए आप। So I asked you, tell me one rahasya. So you said left tantra. So I told you, you tell me one नाम है कि rahasya from that left tantra, रहस्य बताइए। because that is just a name. आप लेफ्ट What is the rahasya in that? बता दीजिए क्या होता है। नहीं, मुझे पता नहीं है, बट जैसे आपको पता नहीं है, ऐसे भी किसी को भी पता So नहीं। just like you don't know, similarly nobody knows. आप केवल एक गलत धारणा बनाए हुए बैठे You हैं। are simply having a wrong अरे जब आप assumption, wrong idea that everybody knows. Nobody knows. Is there somebody more intelligent than you? कौन है? बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, आप ये हो। आपकी गलत धारणा। नहीं, So this is your wrong understanding. पता नहीं है तो मेरे को नहीं पता है, आपको कैसे पता कि मेरे को पता है? नहीं नहीं, नहीं, मैं ऑल इंफॉर्मेशन एंड ऑल रहस्य मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को चाहिए वो इंफॉर्मेशन, तो So वो what I mean is that when I say all are available, what I mean is that people can take out all the rahasya, whatever they want. So I am saying that no, they cannot get the rahasya. जिसके पास में रहस्य होगा वो This कंप्यूटर is your wrong understanding. One who knows rahasya, he does not upload it on the computer. जिसके पास में रहस्य है उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन है जिसके किसके पास में रहस्य है। अच्छा, और जो आकर फिर तो कंप्यूटर One who has rahasya does not leak it on the computer. तो वो रहस्य को And those who are putting on the computer, either they are not putting the rahasya, लोगों की कुछ समझ में आ जाए, ज्यादा नहीं डालेंगे, या उनके पास में they only tell that much what people can understand, or maybe they don't have only. अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया और आई एम फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड बाबा जी।
हाँ जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि जैसे भगवान ने अंत में जाके कहा ना गीता में, As Bhagavan says at the end of Bhagavad Gita, कदाचन ना शुश्रूषे वाच्यम ना च माम योऽभ्यसूयति, कि अब ये ज्ञान जो है ऐसे व्यक्ति को इदम ने ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना च शुश्रूषे वाच्यम ना च माम स्वाभ्यसूयति। भगवान कहते हैं ज्ञान ऐसे व्यक्ति को मत देना जो तपस्वी नहीं है। so Bhagavan says that don't give this knowledge to one who is not tapasvi, one who is not bhakta, who does not want to do seva, ईर्ष्या and करता है। one who is envious of अब कोई me. कह सकता है कि ये ज्ञान तो उपलब्ध है पुस्तक So में, now you may say this book is available, knowledge is available. पढ़ सकता है। The one who is not a bhakta, he can also read. Yeah, he will read what he will understand. Bhaktas only not able to understand Gita. What will an तपस्वी नहीं है, abhakta or a non-devotee understand? One who is सोचेंगे कि इसमें से not पैसे austere, what will he पैसे understand? कमा Yeah, लेंगे। he may take something out from this and earn money, रहस्य है but इसको the rahasya, the रहस्य secret शब्द of Gita, ये रहस्य शब्द का 2 बार ही what उपयोग किया Bhagavan is गया है, using एक the बार word अंत में rahasya, और एक बार he has भगवत used it गीता में। twice. He uses here and at the end also he uses it. सर्वगुह्यतमं भूय, गुह्य शब्द का मतलब वही रहस्य, So Guhya also means rahasya only. और उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने से So आपको you can कुछ read नहीं it. होने वाला, वही तो By reading, you don't शब्द है, understand. That's what I'm saying. लेकिन शब्द के पीछे These are अर्थ the क्या है? words, but what is the artha, the meaning behind the words? That only a rare person मनुष्याणां knows. सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान गीता में कहते हैं बहुत लोग In हैं Gita, Bhagavan says that there are इस so many मार्ग के बारे में सोचते people, ही नहीं है। they don't even जैसे कोई think ज्ञान about की this थोड़ी path. बात पर आता Out है, of ऐसे them, बहुत लोग some very few people सिद्धि come की on बात this करते हैं, path, वो भी मेरे को नहीं जानते। and out of that, वो many भी यहाँ people who get siddhi, they also don't know me. भगवान कृष्ण क्या है, How many भगवान people in कृष्ण this को world know what पता है, Krishna actually is? Even Krishna's bhaktas don't know what कहने से नहीं है Krishna कि is. कहने लगे कि वो स्वयं Just भगवान हो, not ये just a matter of समझने की बात speaking. नहीं है। You can say that he is कितने लोगों Swayam ने Bhagavan वास्तव में and this. अनुभव किया है इस It's ज्ञान not को? just a matter of words. How many people have actually realized that or experienced that? एक दो ऐसे होते So Bhagavan says maybe one or two may be हैं। like इसका that. कोई भंडारा नहीं है, So it is not a फीस्ट, free bhandara getting feast. ये सेल्फ प्रोटेक्टेड नॉलेज है। This knowledge is self-protected. क्योंकि इसकी प्रक्रिया ही ऐसी है जो मैंने बताई थी। यहाँ तो समझने का प्रयास करो तब समझ नहीं आती है। So its system is like this. Even after trying to understand, it is so difficult to समझने understand. की प्रयास So करो, ordinary person, what will खाना understand? खाके टेलीविजन लगा के फिर आप सुन रहे हैं तो आपको Taking पता नहीं dinner, अर्थ होगा। sitting in front of television, इसके hearing. लिए मेहनत This करनी is not पड़ती the है, way to तपस्या get करनी knowledge. पड़ती You have to work hard for that. Do है, tapasya. जीवन लगाना पड़ता है अपना। You have to invest your whole life into this. Then you get the knowledge. है कि ये प्रश्न ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी पूछता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये रहस्य केवल भक्त और उनका सखाओं के लिए है, लेकिन फिर भी The भगवान question Bhagavan says that this rahasya is for his bhaga, for his bhaktas, for his sakhas, but still Bhagavan is known as Jagat Bandhu, वास्तव में the friend of the whole world. सारे जीवा इनका वो कहते हैं कि मैं जगत बंधु हूँ, विश्व में हाँ वो कहते हैं, लेकिन आप तो नहीं कहते हो ना। So Bhagavan is telling he is Jagat Bandhu, मैं but आपको you are कहूँ कि not आप मेरे telling मित्र this, हैं, na? आप I कहेंगे tell you, आप you मेरे are मित्र my नहीं friend, हैं, but you don't say तो like आपको that. तो लाभ नहीं होगा ना। ये तो Then how will you benefit? It is what I am saying. भगवान कहते हैं, Bhagavan is telling. चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च सुहृदम सर्वभूतानाम हृदय से। वो कहते हैं मैं तो सबका सुहृद हूँ, लेकिन जीव तो नहीं Bhagavan मानता says है। that I am everyone's well-wisher, but the Jiva is not accepting it. If you accept it, भगवान हो गया आपका, then your life is perfect. लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है। But we are not ready to accept that. समस्या हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से Problem कोई is from समस्या our नहीं। side. From his side, there is no problem. ठीक है, प्रश्न है आप बता रहे Next हैं कि question. गुरु और शिष्य के हृदय You were talking about about एकता का मिलन है, one-heartedness with Guru. तो क्या आपके Do you पास कोई have any प्राइवेट विधि practical है जिससे हम tips अपना how हृदय to गुरु make our और heart as शिष्य को बना clean सके? as मेरे Guru? पास कोई प्राइवेट विधि नहीं है। I don't have any private secrets सम्माननीय methods for प्रधानंद जी this. का प्रश्न है, यदि Next मैंने सही question. समझा है
तो If I understood हमारे correctly, the शास्त्रों के secret of अनुसार not सबसे losing बड़ा sight of गुरु the है eternal knowledge जिससे Sri Krishna हम spoke अपने about गुरु की कृपा is से to have मिलेंगे। oneness in heart तो with ऐसा Sri नहीं Guru. कि कोई गुरु If के so, हृदय के how साथ does जुड़ने one के लिए develop किसी से this oneness मिलता of है। heart? इस समय Alaukik मैं Shraddha अलौकिक in श्रद्धा Sri को Guru पाना मेरे लिए seems beyond me at this time. तो फिर नहीं हो सकती है, No, if you feel like that कोई असंभव लग रहा है it तो is फिर beyond असंभव। you, it is impossible, then how it can be possible? It is not possible then. आप ही कह रहे हैं कि असंभव लग You रहा are है only तो telling it is पॉसिबल नहीं है। impossible. Then how it is possible? It is possible. Sorry, it is not possible then. धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Dandavat Pranam. Thank you for a wonderful class. You made it very evident what it really means to be in parampara, this joining of the heart between student and teacher. And I'm so grateful for this. But a question arises, and often when you're speaking to people, because they've experienced something that hasn't been in synthesis with what you're saying. And so now they've been through so much, and then they say, well, is it possible for me just to be united at heart? Do I have to undergo ceremonies like Diksha, or even people are coming up with concepts today of, this Ritvik Vad of just taking Diksha from sound as non-existence, just as a safety net, because we don't know what the caliber of the Guru is today. Can you kindly just comment on this, please, especially within our Gaudiya Sampradaya? No, I already commented on it. I said that now what people want is that I have everything available, all the books are available, and lectures are available of different teachers, different acharyas, even those who are not physically present. So I can listen all the knowledge from different places, and I can design my own sadhana, and I can do it. And as far as thinking, yeah, I can accept also little diksha about a guru who is not even present. Like other days, somebody sent me video how somebody was giving sannyas on internet, on Zoom. So all this is possible. So this is exactly what I said, that the words are of the guru and meaning is of the disciple. So that is what is prevalent now. Whether we call it Ritvik Vad or Diksha Vad, doesn't matter. That's what is happening. Because this system is different, what Krishna is describing. He used this word bhaktosi me sakha cheti rahashyam hi etad uttamam. So these words are very important, that this rahasya I am revealing. Similar statement is in the very first chapter of Bhagavatam. Bruyu shnigdhasya sishyasya guruvo guhyam apyuta. That gurus will disclose guhya. Guhya is another word for rahasya. To whom? It's Shishya who is Snigdha. Snigdha is, you can say, same as Bhakta and Sakha. So unless that happens, this secret knowledge does not get transferred. But because anyone who comes on the spiritual path, he cannot say that, well, I'm not following the right path or I don't have the right understanding. That your ahankara will not allow you to think like that. So then you will make your own understanding. You will concoct your own understanding out of Shastra, out of the words of the Guru, and then say, look, this is what is said, and you will put it together logically. So our mind, our intelligence, they are good at that. And that's what you see. I mean, recently I watched some of the videos. One part is saying that Diksha is important, other is saying Diksha with the living Guru is important, other is saying that no, it is so and so is the last Guru, and that's all. So both have their explanation and arguments, and they both believe in it. And now it depends on the new person who gets influenced by which one, and that influence will come because of one's own sanskaras. So that's what is happening. So this is what Krishna is doing is different.
what is happening is different. पुरुषोत्तम जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। हिंदी में कहिए प्लीज। हिंदी में क्या कहना? आपने अभी जो कहा सब सारांश वो जरा बता दीजिए तो लोग सुन सारांश पाएंगे। यही है, सीधी बात यह है कि So the essence is that human being मन से चलता है, works by his, होता है lives by his गीता में कहते own हैं, whims and fancies, his mind. तो एक है मनमना और एक है मनमानी। So Bhagavan is telling man mana, and there is another thing called man mani. Man mani means by our independent ideas, whimsical whims and fancies. मन की बात सुनो, Just listen to own mind. That is what we have made it. So that's what I was explaining, that the words are of Guru. Guru has said like this, but the disciple applies meaning according to what is comfortable to him. Accordingly, he derives the meaning, उसके लिए वो शास्त्र की भी सहायता लेगा, and then for that he takes help from Shastra also and other acharyas, कहेगा नहीं देखो यहाँ भी ऐसा कहा है, या किसी की जीवनी उठा के लाएगा कृष्ण के or he will take out somebody's life from some book like Vraj Ke Bhakta, and then he will show stories from lives of previous saints. तो इस प्रकार से चलता रहता है। So all these things go on. उन भक्तों की जो कहानी जिसने लिखी है, क्या उसने वास्तव में ठीक से अनुसंधान, Now, those who have written those stories, have they researched it properly, or whatever they heard, they just wrote that? Is it according to Shastra? Was that devotee actually according to what is written? Was he like this? अपनी बात को मनवाने, So, like this, they will find many examples to prove their idea. First of all, they will convince themselves what they think is right, because every person, whatever he does according to his mind, is right only. According to him, it is right only. Even if it is wrong, he will find out some logic to prove that it is right. इवन के कोई किसी के साथ में बलात्कार करता है तो उसका भी तर्क Even if somebody is doing theft or even rape, then for he will just justify that also, because at least he has to convince his own mind. उसको वो एक दोष भावना, गिल्ट फील, Otherwise, he will continue suffering from guilt, तो वो कोई पसंद नहीं करता है। and nobody likes to live in guilt. जो भी कोई आदमी कुछ काम करता है वो ठीक ही That's करता है why अपने मन से, every person, लेकिन यहाँ whatever he ठीक does, करने की बात नहीं है, या भगवान के मन से ठीक या नहीं है वो चीज है। is correct only according to him. But here that is not important. Here important is it right or wrong according to Bhagavan? What does Bhagavan want? What is Bhagavan's opinion? कि मैं मतम, ये मेरा मत है, Like he says, this is my opinion. So the important point is what is his opinion. जीवन ढालना है, तभी हम हमको उनका भक्त कह सकते हैं। नहीं Then only we can say we are his devotee. अपने मन से रहें, कहते हैं हम भगवान की भक्त, Otherwise, how can we say we are his devotee? तो ऐसे तो संभव Because we are living by our own whims and fancies, but we say we are his devotee. नहीं हो रहा है। दूसरी So in our sampradaya, this is only what is happening. I don't have much knowledge of other sampradayas, but in Gaudiya sampradaya, I see this only happening. So many different points of view. Somebody says something, somebody says something else. देखते रहते हैं, So I see it always. This is what is going on. ठीक है। प्रार्थना श्लोक, We'll recite prayer verses. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।